नमस्कार जय जगन्नाथ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई नो एटा तुम मैंने समस्ते पाई जाइए बिकॉज काली इवनिंग रे ऑर्डर कॉपी आसला एंड तुम मैंने समस्ते डाउनलोड भी करें कोर्ट आम जो रिव्यू पिटिशन नंबर बहुत जनकर रिक्वेस्ट थिला कि ऑर्डर को शेयर करा जो पीडीएफ को तो मु टेलीग्राम चैनल ले ऑलरेडी शेयर कर सारी एंड मु ए ऑर्डर को पूरा पढ़ला किसी पॉइंट्स आसला सामना को जोड़ा मु चाहिए ये वीडियो माध्यम शेयर करने राइट सो ये वीडियो को स्टार्टिंग रो एंडिंग पर्यटन निहाती देख बिकज आम सब कहूलु कि कहीं आमर शुणागलानी तो लाइक से बहुत जनकर क्वेश्चन थिला कि आम एडवोकेट कहीं रिप्रेजेंट कलेनी यहाँ सीटा वगैरह वगैरह तो देख आम मन में जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी ना सब ही ऑर्डर कॉपी पढ़ला क्लीयर हो बिकज गोटे जिनस जाणी रखा दरकार कि किसी जिनस क्या भी अचपा ना समस्त को सब जिन देखा जुडिशियरी को भी सब जिनस जना तो जमी रिव्यू पिटिशन गोटे फाइल होता फास्ट तुमने जान कि ऑर्डर रिव्यू करने आप जो ऑर्डर देते से ऑर्डरटा आउ थे रिव्यू करूँ देखूँ आउ थे एंड आउ गोटे फाइल होता रिट पिटिशन फाइल होता कि जे जो 11 से 4 जन सिलेक्ट होते से पार्टी कनसीडर कर एंड पार्टी कनसीडर कलापर कथा भी शुणिकी जजमेंट आउ थे दि जाऊ रईट यहीटा थिला तो ये जिनसर रिप्लाई गोटे 52 पेज ऑर्डर कॉपी आसी जो तुमने समस्त जान कि डिसमिस करा जाए तो गोटे 30 सेकेंड काली गोटे वीडियोटे था जो लास्ट 2 लाइन थिला कि जो 3टा क्वेश्चन थिला बट ऑर्डर कॉपी को पूरा पढ़ला सब जिनस ये क्लीयर हो कि कौन कौ जिनस केमी राइट सो ये मु 34th रू आसुची डायरेक्ट ऊपर भी तुमने ये जिनस सब थिला ऊपर तो गोटे क्वेश्चन सब क्वेश्चन आंसर ये अच्छी तो मियर इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द सिलेक्ट लिस्ट डजंट कन्फर एनी राइट टू क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट गोटे ना खाली इंक्लूड करदे से गोटे राइट नुहे टू क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट राइट हाउएवर द राइट टू गेट अपॉइंटमेंट वंस द फाइनल सिलेक्ट लिस्ट इज पब्लिश्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट जस्ट बी मियरली ब्रश्ड असाइड सो देन टिके टिके धैर्य धरिकी सब जिन देखिए अच्छे मुझे पूरा हाइलाइट कर देती से गुड़ा भी खाली से गुड़ा जनईदेवी द जजमेंट्स रिलाइड अपन बाय लर्नड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिव्यू पिटिशनर आर आइदर बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द सिलेक्ट लिस्ट जोटा कि आम केस है और वेयर द पिटिशनर वेयर ऑलरेडी इन द सर्विस and their promotion or seniority was being questioned without impeding them as a parties तो दी प्रकार कथा थिला कि या तो फाइनल लिस्ट आसी सारी ना से मैंने ऑलरेडी सर्विस रे थिबे जोंडर प्रमोशन ये सीनियरिटी एज ए पार्टी जदि कंसीडर न कराइथियो से क्वेश्चन रहबा थिला देयरफॉर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू सिनेरियो डिपिक्टेड हियर इन अबव राइट where the right has to crystallize, that is the selection process is not over and a mere list of shortlisted candidates prepared in a violation of rules, very important point, and the other scenario, right? The first scenario being आम केस कौन है ना ये कौन है ना फाइन सिलेक्शन प्रोसेस सरी नाला राइट दीटा लिस्ट आम आस जानी आम गोटे लिस्ट होची फर्स्ट लिस्ट आसला जोटा 1104 को लेकिन से लिस्ट क्वालिफाई जो होते से सिलेक्ट करा जाइतिला डीवी आउ स्किल टेस्ट पाई आफ्टर स्किल टेस्ट रे क्वालिफाई कला परे गोटे फाइनल मेरिट लिस्ट आसीबार थिला जोटा कि कोर्ट ऑर्डर हिसाब से रही जाइतिला फाइनल मेरिट लिस्ट तो सहीटा तो आसी नथिला ना से जिनस लिखाई जे सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट ओवर एंड मियर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड इन अ वायलेशन ऑफ रूल्स बिकॉज कोर्ट को हिसाब से जो ऑर्डर थिला सेटा गोटे वायलेशन ऑफ रूल्स रे प्रिपेयर कराई राइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल सिलेक्ट लिस्ट और while questioning the promotion of seniority vis-a-vis a candidate who have not been added as a party to the writ petition दीटा scenario को गला under the first scenario no right of such persons is affected as it was not finalized that they would be considered for being appointment आफ्टर द एंटर सिलेक्शन प्रोसीजर ओवर तो आम मन ये क्वेश्चन थिला ना कि कौन गारंटी जे 1104 रु को पिला से 796 भितर रहिबे को पिला रहिबेनी राइट तो सही जिनस ये मेंशन है ओके in addition to the above this court would also like to observe that in course of hearing of the entire writ petition this learned senior counsels including the Advocate General matter AGV thile appearing for the state opposite parties took almost all possible grounds to defend the conduct of OPSC. This court in a detailed judgment by taking note of the contentions of all appearing parties by judgment number this 19 जो judgment आस्था से dispose of
the said writ petition. Moreover, by an interim order, the court had directed not to finalize the selection process. तो जेतले हियरिंग होतला सेतबले selection process को finalize न करिया पई कहैतला. As a result of which the selection could not be finalized for several months. Still, we can say कि एत पर्यंत से जिंसरा the shortlisted candidates were all aware of the pendency of the earlier writ petition. समस्त को जाना थिला, shortlisted candidates को जाना थिला, समस्त को दुनिया माने जाना थिला सब जिंस, right? Appointment to the post of ASO was hanging for quite some time. However, the very important point guys, however, no effort whatsoever was made by them to implead themselves as a parties to earlier writ petition. सेते बेले केही भी किसी भी एफर्ट पके नथिले जे हमको एज ए पार्टी कंसीडर करा जाऊ. On the contrary, they preferred to wait. You can see here, they preferred to wait and watch as fence-sitters after the final judgment was delivered by holding that the selection process adopted by OPCs dehorsed the relevant rules. The review petitioner have approached this court by filing the present review petition as well as connected writ petition only with the intention to delay the selection for further, right? यही जिनसा आम भावुल ना एत दिन पर्यंत कहीं चुप अच्छा माने जजमेंट आसला अप्रोच करवा रिव्यू पिटिशन एंड रेट पिटिशन माध्यम कोर्ट इज सेइंग दैट देयर इज एन इंटेंशन टू डिले द सिलेक्शन फर्दर. Indisputably, the facts and the circumstances of the present case, the review petition were not finally selected and no final merit list was published by OPSC, thereby conferring a valuable right on the review petition for being appointed to the post of ASO. Further, the private petitioner must this challenge the selection process on the errors which were apparent on the face of the record. Now, OPSC had conducted the selection process by violating the provision of the relevant rules. More particularly, this further the previous writ petition remained pending before this court for several months, and by virtue of the interim order, the selection process was directed, not to be finalized. The hearing of the matter also continued for several days, and the same was being reported by the local newspaper as well as the electronic media. So it newspaper रे भी आस्तेला, electronic media रे भी आस्तेला. No attempt whatsoever was made to intervene in the matter at that stage. से stage रे कौन पाई सेते बड़े किसी effort पका वाला नहीं कि हमको उड़े party consider करा जाओ. However, after the final judgment was delivered upon conclusion of lengthy hearing, the review petitioner have approached this court by filing the present review as well as writ petition challenging the final judgment dated 19th May. In addition to the above, the court has categorically held that the review petitioner were not necessary parties to the previous writ petition. पूरा जिनस को ये मेंशन कराई जोटा आम भावुल ना एत दिन सब जिन चलला अलमोस्ट गोटे 6-7 मास 6 मास अलमोस्ट 6 मास आम केस स्टार्ट हबार नहीं कि 6 मास पर्यटन चलीगला माने डिसेम्बर नहीं कि मे रे जाकि जजमेंट आसला से दिन पर्यंत तो समस्ते देखुले सब जिनस को ना न्यूज पेपर टीवी वीवी सब आड़े तो आसूला से तो चाह पारते से तो एज ए पार्टी आसी पारते ना व्हाई नॉट एट दैट टाइम, राइट? Maybe intentionally is करा जाइए, right? In the aforesaid background, this court would now record its finding to the issues formulated by the preceding paragraph. The first ground that was formulated by the court was to whether the grounds taken in the review petition are good grounds, and accordingly a review petition is entertainable or on such grounds, right? Next, review petition the good grounds review petition. In reply to the said ground, the court is of the considered view that the ground with regard to non-joinder of necessary party which was emphatically argued by the learned counsel is definitely a good ground. So far maintainability of the review petition is concerned. So ये maintainability कथा टा थिला बहुत जन को डाउट थिला से वीडियो देख साला पर ये maintainability कौन petitioner को for रे कौन दिया गला तो एटी सब जिनस अछि. With regard to the other grounds taken in the review petition, this court would like to record that such grounds are based on merits of the issue which has already been decided by the court in the earlier writ petition. Therefore, the event the petitioner are aggrieved by the findings of the court, they should have been well advised to challenge the same by filing an intra-court appeal, right? So this line is very important. In the event of petitioner are aggrieved by the findings of this court, जो the order findings रे petitioner are aggrieved भावुचन, they should have been well advised सेमन को
advice करा जाउची कोर्ट द्वारा कि they can challenge the same by filing an intra court appeal. Thus the first issue is answered accordingly, right? The next question that was formulated by the court was by this court was with regard to the maintainability of the writ petition by the review petitioner challenging the judgment and dated ethic in the process where they were not added as a party. This एटा तो already sorti ये विषय तो कोई ची सेठी गोटे केस भी देखा हितला and in reply एठी गोटे आसी देखो in view of the answer this the review petition at the instance of the petitioner are maintainable कोई केस थला and तापरे कोर्ट आडू गोटे केस रेफरेंस दिया देखो with regard to observance of principle of natural justice and providing an opportunity to the petitioner is concerned, this court would like to refer a judgment of Honorable Supreme Court in Union of India versus other versus Vikas Kumar कही तो यही जजमेंट पढ़ा माने एथरे कौन हेतला द मैटर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट ऑफ EDDA is not governed by any statute but by departmental instructions. It is now treated that if a mistake is committed in the passing an administrative order, like good mistake जदि हेतिबो the same may be rectified जोटा को rectify करियो. Rectification of a mistake, however, may in a given situation require compliance with the principle of natural justice. It is only in a case where the mistake is apparent on the face of record जोटा आम कथा कहउची आम बलिया केस a rectification thereof is permissible without giving any hearing to the aggrieved party. Selection process रे किछि गुड भूल हेछि रूल वायलेशन जदि हेछि सेटा को रेक्टिफाई करि हबो without considering the selected the list रे जो पिला थिले as a party, since the petitioner were not necessary parties to the earlier writ petition and further the error in the selection process was apparent on the face of record. By applying the principle as reflected in paragraph 12, the rectification of such error or mistake is permissible without giving any hearing to the aggrieved party, if any there is one. Thus, this court found no force in the argument of learned counsel, senior counsel, appearing for the petitioner that the judgment dated this rendered by this court in the previous writ petition is vitiated in any manner by non-gender party, who according to this court are not necessary parties, and by not providing such parties an opportunity of hearing before giving a direction for rectification of the mistake or error in the selection process, as it cannot be constructed that the petitioner can be in any manner be called as aggrieved party. So जो क्वेश्चन थिला कि पार्टी से जिनस क्लियर करा गला and here it is, right? So एडी अछि in view of the aforesaid analysis of the legal as well as factual position, this court found no ground whatsoever to entertain the review petition as well as the writ petition filed by the petitioner. Hence, both review petition as well as the writ petition are hereby dismissed and this is disposed of. So, हेटा होची थिला जो जिनसटा. So, मु एबे कहि परिबि कि एटा निहाती आम फॉर रेसिडेंट कोर्ट को सबु जिनस देखो आमे जत्तिकी जिनस आम मन रे आमे जत्तिकी जिनस भाबुतिलु सबु जिनस एठिकी मेंशन कराई सबु जिनस एठी मेंशन कराई. तो ये जो रिव्यू रीड थिला दीटा जाको ये हे गला डिसमिस हे गला. नेक्स्ट हमरो जो कंटेम्प्ट फाइल हे से कंटेम्प्ट रो हियरिंग, देन टाइम पिटिशन ओपीएससी आडू जो फाइल हे तार हियरिंग तार अपडेट आसी जिवो, राइट? तार भी अपडेट आसी जिवो एंड आउ गोटे डबल बेंच वाला जो जाइछि तार कोन हबो सेटा भी जणा पड़ि जो, राइट? देखो सफर तो आमे होचु सिलेक्शन प्रोसेस रे जदी एतिक सारा जिंस न हेई था मे भी एतळ को एसोर सब जिंस सरी जाइत. म आगुर जेमति कहिछि कि जे गोटे जिंस जोटा बेसी दिन अपेक्षा करियो पड़े ना, अपेक्षार फल मीठा, राइट? सो मे बी बहुत जल्दी आमे एक्सपेक्ट करिवा जिंसटा को ओपीएससी आडू. सो ओपीएससी जदी रिव्यू रेट को वेट करथिले तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट थ्रू दिस वीडियो kindly publish the results are already amaro 1 year बर्बाद हो आसलानी. सो आशा करूँ कि एबे बुझी पार्थिबे एंड एबे जल्दी कोर्ट ऑर्डर हिसाब रे रिजल्ट आसी जाओ. ओके, जहाँ भी अपडेट रहिबो मु निहाती वीडियो माध्यम रे जणाई देबी. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर मेंटेनिंग दिस यूनिटी एंड लास्ट जाए एमती यूनिटी मेंटेन करी रखिबा. जय जगन्नाथ.